बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू डिग्री सेशन। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हम मुख्तलिफ आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स में बोलते हैं। यस टीचर्स, आज का टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ द डायग्राफ आर। आर आर की आवाज़ को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी बहुत सी तस्वीर है जिनका नाम आपको आते हैं और जब आप वो नाम बोलते हैं तो उसमें ये आवाज़ छुपी होती है। टीचर्स, इस लेसन को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने जो प्रीवियस लेसन है जिससे हमने ट्रेन और रेन में जो डायग्राफ था उसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे तरीके से कर ली है, तो आज इस साउंड को हमें कुछ और तस्वीर में ढूंढना है और फिर उसको टास्क को कंप्लीट करना है। किताब का सफर देख लीजिए जिसके ऊपर आपको आज की एक्टिविटीज दी गई है। एक्टिविटीज का जो स्टाइल है वो फेमिलियर विद इट, दे नो इट किसको कैसे काम करना है। लेकिन आज का जो हमारा ELO है उसमें हमने जिस साउंड को फोकस करना है वो आर की आवाज़ है, जो कि मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए मैं इसे कम्युनिकेट करूंगी और फिर आपको फर्दर फिल्टर करूंगी। तो बच्चों ये बताइए ये आपको किस चीज़ की तस्वीर नजर आ, व्हाट इज दिस, व्हाट बॉडी पार्ट इज दिस? Can you name this body part? This is my arm. 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 Sound? R. Arm. Yes. Can you show me your arms, please? किसके muscles strong है? मेरे तो बहुत weak है. Arm. Yes. Okay. This is a मैन कटिंग हेयर। सो व्हाट इज ही कॉल्ड? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? नाई कहते हैं या हजाम भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। बार्बर। कैन यू हियर द साउंड?
R, R, R. Ja, ja, far, 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 far. मुकम्मल करेंगे आपने क्या टास्क करना है द पिक्चर इज देयर साउंड आपने जब वो साउंड लिखने के बाद वर्ड कंप्लीट करना है तो आपका टास्क मुकम्मल हो जाएगा। और आज के हमारे कौन सी साउंड है जरा मेरे साथ जल्दी से रिपीट कर लें। आर 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 गुड। तो कैरी ऑन विद एक्टिविटी डेटिंग आज का जो हमारा येलो है स्टेज ऑन विद अवेयरनेस ऑफ द डायग्राफ आर इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपके पास और भी बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज और जरूरी पॉसिबल करें। एक एक्टिविटी जो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रही हूँ यू कैन हैव अ ग्लास जार और प्लास्टिक जार ज़्यादा एक्सरसाइज इसको कीजिए और कोशिश करें कि जो साउंड करें उनको भी आप इस तरह से भी फॉलो करवा लें। तो पहले बच्चे अपनी किताब का सफा मुकम्मल कर लेने के बाद में देखेंगे आपकी किताब में वो वर्कशीट आपको दी है ध्यान रखेगी आज की साउंड साउंड और